expensive. दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो लास्ट क्लास हम लोग अटैच कंप्यूटर कर चुके थे। रिवीजन हो गई? विनय, हेलो। रिवीजन कर लियो तुम लोग ना? हाँ सर करते रहे, लेकिन मेन अटैच वाला छूटा था ना शुरू में 2 क्लास। वैसे तो चलिए रहा, उसके बाद जो आपने जो भी बताया, जैसे परसों बताया था वो वाला भी चलिए रहा। पिछला बाकी सब करके ना? हाँ सर चलिए रहा कंटिन्यू। जरूर चलेगा। हाँ सर। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं राइज प्रोसीजर पे। So right is the MAC-layer procedure which will be initiated by the UEMAC. Actually, when the RAS procedure will be initiated, so actually if UE does not have enough resource for their uplink transmission, then what will happen? UE need the resource. So for that, UE MAC layer will send the RAS request message to the eNodeB MAC, and then eNodeB MAC layer will grant the resource, because resource request, resource grant, all these things the job by the MAC layer. UE MAC layer will request the resource and the eNodeB MAC will grant the resource. So, so there are two types of the RAS procedure: contention based ratching and non-contention based.
So contention means obviously it's a collision. There would be the collision of the two write request message. That time it's called the contention based writing procedure. Means if the more than one UE send the write request message and the write request has collided. How can we collided? If the two UE send the write request message at the same time, if two UEs send the write request message at the same time and with the same preamble ID, I'll tell what is the preamble ID, with the same preamble ID and same time, then which will cause the contention, which will cause the collision of the two write request message, and that time it's called the contention based writing procedure. With same preamble ID. What is preamble ID? I'll tell. So actually in a cell for the writing, there are total 64 unique preamble ID. In a cell, there will be 64 unique preamble configuration index. Actually, what is the use of the preamble configuration index? It will actually define with random access procedure. What I told, it can, when UE does not have enough resource in uplink for uplink transmission, then UE will initiate the write procedure. But when it has to initiate in LT1 frame having the 10 subframe, so in which subframe the resource has given for the UE to initiate the writing procedures, that answer will be given by this preamble configuration index. So if you see, actually in fact there's mapping in the physical channel PRACH and the logical channel RACH. This is physical channel, this is a transport channel. This is a transport channel, means suppose now it's a MAC led procedure. So from MAC to physical, it is RACH and PRACH. Corresponding which logical channel? So for RACH procedure, no logical channel. Why? Because this is the MAC layer procedure, not RRC procedure. So no need to transmit to the RLC layer. It is the MAC layer procedure, so it will be initiated from the UE MAC, and then again it's in eNodeB side, it will receive to the eNodeB MAC layer. So it's only the MAC layer procedure, so only transport channel. This is the transport channel and the physical channel. So these two channels are required. We don't require any logical channel.
So when the macler initiate the procedures, write procedure, so at what time in a frame, LT1 frame having the 10 subframe, suppose subframe 0 till subframe 9. So at which subframe write will be initiated, that answer will be given by the Primble configuration index. So in fact there are 5 p-RACH parameter which will define the RACH procedure. So p-RACH parameters, and out of that p-RACH parameter is first is your Primble configuration index. In Primble configuration index, what I told, there are total 64 Primble ID and one Primble ID will be located to one UE. अब suppose करो, so what I said, there is total 64 Primble ID. This is unique 64 Primble ID, 64 unique Primble ID. But in a cell, there may be more than 64. It's possible that there may be more than 64 users who wanted to initiate the write procedure. And then what we'll do? Unique only 64 Primble ID. But if more than 64 users want to initiate the write procedure, then it's a chances that more than one UE will have the same Primble ID. So if we'll initiate the write procedure, then तो अब मोर देन 64 यूजर रैच इनिशिएट करेगा तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ यूजर को सेम Primble आईडी को रीयूज करना पड़ेगा. We cannot say it's unique. 64 is unique, but if more than 64 user has initiated the write procedure, so it may be possible. So for example, 66 user has initiated the write procedure, but we have how many code? We have only 64 code. So the remaining two user have to use the again some code that will be using by another user. So there may be chances that more than one user can use the same Primble ID. Then more than same Primble ID. अब suppose for situations, this is your radio frame. In each radio frame we have 10 subframe, subframe 0, subframe 1 to 10 subframe.
So in this subframe is next, which frame, in that frame, which subframe will be used for the RAG? How UE will know? So that answer will be given by the Primble ID. Means once UE know their Primble configuration index, then UE will understand. कोई क्वेश्चन पूछा है तो ध्यान देना, पूछेगा कब स्टार्ट करेगा तो based on the Primble ID. If UE know the Primble ID, it means UE know at what time, means at which subframe, in which frame UE will initiate the RAG procedure. Where UE will initiate the RAG procedure. So how UE will know which Primble ID they are using? So actually there will be the 5 parameters, as I say, PRAG parameter. So first one is the Primble configuration index that we define. There are total 5 parameters that we'll see one by one. So UE will know this Primble configuration index within SIB2 if UE in idle mode. जो पहले एक मैं टेबल दिखाता हूँ, स्पेसिफिकेशंस का टेबल है, based on that table it will become clear. इसलिए स्ट्रेस का टेबल है तुम्हारा 36.211 मैगलेर. See, if you can see this table, Primble configuration index value from 0 to 63. Means total 64 Primble ID, that value is from 0 to 63. See, corresponding to each Primble format, sorry, Primble ID, their Primble format. Total there are 4 Primble format. Why? 64 Primble ID. So this 64 Primble ID will be divided into 4 Primble format. Each Primble format will have 16 Primble ID. So there are 4 Primble format. This 64 Primble ID will be divided into the 64 Primble format. Means Primble format 0, Primble format 1, Primble format 2, Primble format 3. So Primble configuration index, please पूरा लिखना, Primble configuration index. So 16 means 0 to 15 will come into the Primble format 0. Then 16 to 31, 32 to 47,
then 48 to 63. सब में 16 total 64, and that will be divided into the 4 Pramble format 0, 1, 2, 3. So now we'll see corresponding to each Pramble ID. Forget right now Pramble format. See only the Pramble configuration index. Based on the Pramble configuration index, here see system frame number and subframe number is given. Means, for example, for any UE which PREG configuration index is 1. For example, suppose in this frame, in LT frame, we have suppose 10 subframe 0, subframe 1, suppose we have 10 subframe. In this subframe, for example, here one UE is initiating the write process. For example, suppose there is one UE1 has to initiate the write process. So this UE1 have to initiate the write procedure, but when exactly in this frame, where exactly UE will initiate the write procedure, that depends upon your Pramble ID value. Example, for example, suppose UE1 Pramble ID is say 1. Suppose UE1 Pramble ID is 1. So in this case, this table will be helpful. By using the multi-dimensional array program, this will be implemented. Developer will implement. So this is already implemented in your Mac layer and physical layer. So then this table will start to run. Once your UE knows the Pramble, the problem is only that UE should know which what is their Pramble ID. Once UE know the Pramble ID, corresponding to that system frame number is even, subframe number is 4. Means that any even frame, this UE which Pramble ID is 1, so UE can initiate the write at any even frame number, means frame number 0, 2, 4, 6, 8, that even frame number, not odd. Only even frame. In that even frame, which in one frame having the 10 subframe. So which subframe where you will initiate the write procedure, that is also given here, subframe 4. So now in this frame, subframe 4, suppose this is say subframe 4. So it means UE1 will initiate the write. Suppose this is even frame. Suppose this is a system frame number. Say 2. This is second frame. So even frame, and here in that this subframe UE1 initiate write. UE1 initiate the write process. सर ये प्री कंडीशन होता है क्या कि जो है कि सब फ्रेम 4 से ही वो जो है कि हाँ ये फिक्स है, चेक नहीं होगा। और 0 1 से क्यों नहीं होता 2 से, इसका थोड़ा कोई एक एग्जांपल देके समझाइए सर, तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी क्या एग्जांपल दिए, अभी क्या दिया हम? जैसे 4 से ही हो रहा है या थोड़ा समझ नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा सही से बताइए। क्या समझ रहा है मुझे? समझ जीरो देखो तो जो तुम्हारा हर कोरस्पोंडिंग तुम्हारा Pramble आईडी पे
यूई को देखो, सबसे पहले तुम्हारा क्या है, प्रेम्बल आईडी से तुम्हें पता चलेगा रैच कहाँ अपडेट करना है। यूई को फिर जैसे तुम्हारा मोबाइल है, सपोज तुमने पावर ऑन किया, पावर ऑन के बाद यूई को तुम्हारा रैच करना है। तो ड्यूरिंग द पावर ऑन तुम्हारा ऑलरेडी यूई एमआईबी एसआईबी को रीड कर लेता है। तो उसमें एक एसआईबी 2 पैरामीटर होता है। एसआईबी 2 में तुम्हारे पास वो यूई को मिलेगा पीरेच पैरामीटर। एसआईबी 2 में एसआईबी 2 का पीरेच पैरामीटर में यूई प्रेम्बल आईडी यूई को मिल जाता है। उसका असाइनमेंट कर देता है उसकी आईडी। हाँ, वो 64 में तुम्हें कोई प्रेम्बल आईडी मिल गई। अब जो कोरस्पोंडिंग प्रेम्बल आईडी मिलेगा, तो ये तो तुम्हारा जो डेवलपर रहेगा, तो प्रोग्राम तो फिजिकल में लिखा रहेगा। ये बाय यूजिंग द मल्टी डायमेंशनल एरे, ये टेबल है ना, ये प्रोग्राम तो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा फिजिकल में। तो जैसे तुम्हारा यूई को प्रेम्बल आईडी शब्द को मिला 1 फॉर एग्जाम्पल, तो उसका कोरस्पोंडिंग ये है कि कोई भी इवन फ्रेम में उस इवन फ्रेम का सब फ्रेम नंबर 4 पे यूई रैच इनिशिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का प्रेम्बल आईडी 0 मिला तुमको, एसआईबी 2 में तुम्हारे मोबाइल का प्रेम्बल से सोचो अश्विनी के मोबाइल को प्रेम्बल आईडी 0 मिला, सो इन दैट केस वो 1 सब फ्रेम जो उसका उस सब फ्रेम पे रिजर्व रहेगा रैच इनिशिएट करने के लिए। सो कोरस्पोंडिंग टू प्रेम्बल आईडी तुम्हें फ्रेम नंबर मिलेगा, और जैसे देखो कुछ लिखा है ए नहीं, मतलब क्या है, हाँ, जैसे कभी कभी दो मैंने सब फ्रेम को जो कि रिपीटेड किया है, जैसे इसमें 9 में ले लिए थे 147 को रिपीट किया है। इसमें से कोई इन दिस फ्रेम, इसमें से रैंडमली आएंगे क्या? इन दिस फ्रेम, हाँ, इन दिस फ्रेम सब फ्रेम 1 4 7 दिस इज रिजर्व फॉर द यूई टू इनिशिएट द रैच। सर मैं अब समझ में आ गया। इसमें ये वाले जो है कि सब फ्रेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएट द रैच प्रोसीजर 147। ओके सर, इट इज गुड। सो प्रॉब्लम की यूई को पता से चलेगा, तो यूई इफ यूई इन आइडल मोड देन एसआईबी 2, इफ कनेक्टेड मोड, इफ यूर यूई इन कनेक्टेड मोड, कनेक्टेड मोड में भी रैचिंग होते हैं, इफ यूर इन कनेक्टेड मोड देन हाउ यूई विल रिसीव द पीरेच पैरामीटर, so that is the message RRC connection reconfiguration. Anyhow, pH parameter will given by the E node B. E node B will provide the pH parameter to UE. How? Option 1, either through the SIV2. So SIV2 का मैपिंग क्या है? SIV2 मैपिंग है ना? हेलो, हाँ सर। मैपिंग SIV2 सर मैपिंग इन द सेंस कि क्या बताना है सर, कि उसमें पेजिंग इंफॉर्मेशन होती है, इनिशियल ट्रांसमिशन पावर होता है, चैनल मैपिंग SIV2 का चैनल मैपिंग हायर लेयर से लोअर लेयर में कैसे जाएगा? नहीं सर, दिमाग नहीं चल पा रहा है। और BCH to BCCH, हाँ, अब इसे सब उलटना शुरू हो गया। हाँ, अच्छा है सर। नहीं सर, उलट नहीं रहा सर, उल्टा नहीं, BCCH फिर ना बीसीसीएस सर ऐसे होता है क्या? बीसीसीएस से जो है कि वो चैनल के थ्रू आता है, डीएलएचसीएच चैनल के थ्रू, और उसमें आकर के पीडीसीएच चैनल को यूज करता है फिजिकल डीएल चैनल के लिए। PDSCH फिजिकल डाउनिंग स्टेज है। यहाँ पे यूई को मिलेगा तुम्हारा SIV2, एंड विद इन द SIV2 E node will provide the preamble ID. If your UE in idle mode, this is situations when your UE in idle mode. Suppose UE in connected mode, then it's the E node will send the message name RRC connection reconfiguration.
देन ई नोट भी RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज भेजेगा और उसके अंदर पीराइज पैरामीटर रहेंगे और वहां से यूई को प्रेम्बल आईडी पता चल जाएगा. Like this way, you will give the pReg parameters. Ashwini, clear है? हाँ जी सर. Next, now suppose in that frame, suppose this is any frequency and time. So total subframe है. So in Premble configuration index will tell when UE will transmit the write request message, but Premble ID is telling the answer only in time domain. In frequency domain, suppose for example, when UE having the any UE, suppose Premble ID was 0, it means which subframe number? Subframe 1. UE can initiate the write, means suppose this subframe. But in this subframe there are so many subcarriers. There are many subcarriers, as you know. Depends upon the total bandwidth. Depends upon your total bandwidth. So there will be many subcarriers now. So in these subcarriers, which subcarriers? This subframe, fine. But in this subframe, all resource, entire bandwidth cannot be given for the write procedure. So in frequency domain, which subcarriers are going to be used for the write procedure? How you will know? Because if you have to give the complete answer, if they will ask when you will tell the resource in the resource grid where you can initiate the write procedure. So Premble ID is not giving the complete answer. That is only half answer. It's telling only time domain. In frequency domain still we don't know the answer. But how you will reserve the resource in frequency domain? उसके लिए अब another parameter. This is the first parameter in the P that you have seen. Premble configuration index. Now another parameter is the second one is the frequency offset. This is the second pReg parameter, and by understanding second parameter, then we can give the accurate answer to which slots which subcarrier. नेहा ने है कि नहीं आज? नेहा
रामदेव नेहा नहीं क्या रामदेव, ये तो फिर कुछ बोलती ही नहीं। उसको डर था ऐसा क्वेश्चन मत पूछना। सो अनम्यूट तो हो। किया नेहा सुनाई पड़ रहा है? सॉरी, और तुम ऐसे ही आंसर दोगे, ऐसे तुम टाइम पास कर रहे हो। अनम्यूट हो तब मुझसे बात करो। क्वेश्चन पूछना, फिर तुम्हें ऐसे पूछूंगा, तुम आराम से गूगल सर्च करके आंसर दोगे। हाँ, तो रामानंद अभी देखो, सपोज को अपने को 10 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ है, तो 10 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ में कितने सब कैरेट्स होंगे रामानंद? कैसा? 10 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ है तो उसमें कितना सब कैरेट्स होगा? नहीं पता। क्या बोल रामानंद, तुम तो ऐसा कैसे हो गया? 10 मेगाहर्ट्ज पे 50 रिसोर्स ब्लॉक एंड टोटल 5 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं जितना बैंड। 600 sub carrier. So now suppose for example in this 10 megahertz bandwidth, so at any particular bandwidth for Sumit, Balakrishna and Dheeraj, at the different bandwidths, which is 1.4 megahertz, 6 resource block, 3 megahertz, 15, 5, 25, 10, 50, 15, 75, and 20, 100 resource block. So these are the number of resource block that one UE will have. Suppose, for example, I am taking the example of this is the 10 megahertz bandwidth. Suppose this is 10 megahertz bandwidth. Now in 10 megahertz bandwidth, how many resource block? 50. Suppose this is in time domain subframe 0. Subframe 1 till subframe 9. So what will do like this? There will be 50 in 10 megahertz. Suppose a resource block 0, like this. Say this is a resource block 49. So for RAG procedure, now listen, for any RAG procedure, compulsory 6 resource block is required in frequency domain. Six resource block in फ्रीक्वेंसी डोमेन. टोटल 6 रिसोर्स ब्लॉक तो लेगा रैज को एवरी टाइम, whatever bandwidth that we don't know, to whatever the bandwidth, but every time any RAG procedure in frequency domain requires 6 resource block. Time domain में तो by using the programmable IT UE can understand at which subframe UE happens to the RAG, but in frequency domain it always needs the 6 resource block.
बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? सपोज 10 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ में, फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल, एज वी से कि एनी यूई, say a UE1 have the preamble ID 0. Preamble ID 0 means which subframe number? Subframe 1 means here at this place UE initiate the write. तो टाइम डोमेन तो प्रेम्बल आईडी से पता चल गया कि सब फ्रेम 1 होगा। ये फ्रीक्वेंसी टोन में क्या ये पूरा का पूरा 50 रिसोर्स ब्लॉक लेगा? नहीं, कितना चाहिए? 6 रिसोर्स ब्लॉक चाहिए ये 50 में। बस ये 50 में 6 कौन सा? हाउ यू अंडरस्टैंड? दैट्स रीजन वी नीड द फ्रीक्वेंसी ऑफसेट, दैट सेकेंड पैरामीटर। Frequency offset will actually tell which 6 resource block has allocated for the write procedure. How? So for that frequency offset, again, when you in idle mode through SIB2, eNodeB will provide the frequency offset value to the UE. Or when you in connected mode through the same message RRC connection reconfiguration, eNodeB tell the frequency offset value. That's why generalize I told कि each parameter, PRES parameter will be transmitted by the eNodeB MAC to the UE. Now suppose this frequency offset value, what frequency offset will tell? Six resource block in frequency domain for write procedure. वो 6 कौन सा लेना है? तो वैसे सपोज नाउ सेम एग्जांपल फॉर UE1 have the PRES parameter. When you see their logs, suppose for PRES parameter to get the value of preamble ID, suppose preamble ID set 0, you set another parameter frequency offset. If suppose this value is 11, for example, so it is telling the starting position of that 6 resource block. Means if it is 11, so in frequency domain, from 11th you start. How much? How many? 6. Means in frequency domain, in this case, for UE1, preamble ID 0 means subframe 1. Suppose this is subframe 1. Suppose this is a subframe 1. And from here subframe number 11, suppose this is your resource block number. 11, so start from 11th, 12th, 13, 14, 15, 16. ये 6 resource block. Means here you can say you will initiate the write process. That's not it. In 10 megahertz, suppose 50. So अब ऊपर के सब फ्री रहेंगे, only this 6, which 6 that will define the frequency offset. जो frequency offset की वैल्यू है वहां से 6 ले लो for the write procedure. कौन सा टाइम डोमेन में? By seeing the preamble ID you will get the your time subframe number where you can initiate the write procedure. बिना clear? So मैं clear difficult है तो कंसंट्रेट बना रखें, कंसंट्रेशन बना रखें. हाँ सर, बट सर इसमें ये इसकी वैल्यूज कहाँ तक होती है? जैसे आपने तो 11 रैंडमली लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा रैंडमली नहीं, तुम्हें अभी जस्ट वो जो डायग्राम है ना, नहीं वो तो इनोड भी देगा। नहीं वो तो समझ गए, इनोड भी देगा, लेकिन जैसे आपने 11 जैसे वैसे रहता है तो
इसमें 11 लिखा है तो मतलब आपने वैसे ही बता रहे हो कि वैल्यू, इसकी वैल्यू मतलब रेंज क्या होती है, कुछ ऐसा है क्या फ्रीक्वेंसी ऑफसेट की? हाँ चलो 11 तो आपने वैसे बता दिया कि रैंडमली, जैसे 10 में है तो 50 हो गए, तो 50 में वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? जैसे 11 डाल देते हैं, 11 से 16 ये तक आंसर स्टार्ट तुम होगी। ही बताओ, इस क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर भी तुम्हारा। किसका क्वेश्चन है? अश्विन तुम्हारा है? नहीं सर, मेरा नहीं है। किसका किसका क्वेश्चन है? मेरा ही है सर क्वेश्चन तो, विनय का। विनय तुम्हारा क्वेश्चन है? हाँ सर। हाँ विनय, बाकी लोग बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफसेट? क्या एलटी इन एलटी 0 से 49 सर मेरे ख्याल से। इन एलटी? नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है? इन एलटी व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफसेट? और एक्सप्रेशन साथ देना, नेट देखना, एक्सप्रेशन साथ देना। सर ये सेंट्रल जो होता है ना, जो सेंट्रल हमारा होता है ना सब कैरियर, एक ही करके बोलो। अब सुनिए, क्या तुम्हारा आंसर क्या है? तो मेरा आंसर है कि जो सेंट्रल होता है ना, जो 72 सब कैरियर्स होते हैं सेंटर में, उसमें से ऊपर से 5 कम कर दो, नीचे से 5 कर दो, बीच वाले आई थिंक यूज करते हैं रैच के लिए। 0 to 95. 0 to 95. This is कौन बोला? Saikant. साइकांत करेक्ट आंसर। देख के बोले क्या? नहीं सर, 6 resource blocks minimum होना चाहिए ना, so in LTE 20 megahertz highest, हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट। so 100 resource block, समय में so आंसर है 95 0 to max. 95। फिर अच्छा, बैंडविड्थ के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा यानी? हाँ, ऑब्वियसली maximum 100 resource blocks होता है. इन एलटी व्हाट इज द रिसोर्स ब्लॉक वैल्यू? मिनिमम 0, मैक्सिमम क्या होगा? 99। 100 resource. हाँ 100 लिखा है ये इसमें। तो चाहिए, मिनिमम चाहिए रेंज के लिए ना। 95 होते हैं, 95, 96, 97, 98, 99। 6 चाहिए. 95, 96, 97, 98, 99, 95, 94 होगा। 94. 94 होगा ना? 94, 95, 96, 90, 0 to 94। I took 1 to 100, so it came. no 100 है, 0 to 0 to 90. numbering 0 to 99 होगा Resource ना? block 0. So the range is 0 to 94। ओके सर, हाँ ये बैंडविड्थ के हिसाब से चेंज होता रहेगा। क्लियर? Yes sir. ओके। और अभी आप लोग सब हर जगह ग्रुप थे, मतलब ग्रुप नहीं, मैं ग्रुप में, मुझे अभी सिर्फ दिस बालाकृष्णा, सुमित और इसको थोड़ा, बालाकृष्णा योर रिसोर्स ब्लॉक कॉन्सेप्ट है डन और स्टिल लेफ्ट? नहीं, वो बाकी है रिसोर्स ब्लॉक। हाँ ठीक है, तो अभी रामानंद यादव आप लोग सब हट जाओ और मैं इनको मतलब बालाकृष्णा, सुमित, धीरज जिनका बैच चला उनको मैं भी रिसोर्स ब्लॉक बताता हूँ, इनको प्रॉब्लम होगी। सर उससे पहले ना मुझे जस्ट ये था कि अपना एलटी के अंदर जो भी डिफरेंट अपने फ्रेम स्ट्रक्चर जो बोला वो एंड फ्रीक्वेंसी वो रिसोर्स ब्लॉक का मतलब ही फ्रेम आर्किटेक्चर हो गया बालाकृष्ण। अच्छा ओके ओके ओके, उसमें फ्रेम आर्किटेक्चर सब आएगा इस। हेलो हेलो हाँ सर, रामानंद, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है तो बड़ा सा पूछ लो सर। ये रेडियो लिंक फेलियर का कॉजेज क्या होता है, क्यों होता है रेडियो लिंक फेलियर? अभी इसमें अपने का ये इस टॉपिक में नहीं है ना? नहीं इसमें तो नहीं है सर। जब आएगा तो कर लेंगे, ठीक है? मैंने ये आएगा ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना सर कभी? आएगा आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। 1.4 मेगाहर्ट्ज है क्या? Yes sir. 1.4 मेगाहर्ट्ज में इसकी कैसे डिसाइड करेंगे सर? डेवलप करी गई है Complete 6 resource block. आवाज नहीं क्या है? सर वो बोल रहे हैं 1.4 का बैंडविड्थ रहे तो कितना रिसोर्स ब्लॉक, so it will use all the 6 resource blocks. 6 हाँ, सब पूरा पूरा का पूरा 6 यूज पूरा करोगे। पूरा चाहिए. ओके अभी तक फ्रीक्वेंसी फिर 0 हुआ था, या ठीक है? अभी मैं कॉल ड्रॉप करके बालाकृष्ण आप लोग रेडी रहना, ठीक है? ठीक है सर, ओके ओके।